जेनेटिकली मॉडिफाइड हो जाता है तो उसमें न्यूट्रिशनल कंपोनेंट या न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो बहुत कम बच जाते हैं। देन आज का बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर ऑफ मास प्रोडक्शन, आप ये जो हमारे जो फार्मर्स हैं या जो भी फूड उगा रहे हैं एट द मैन्युफैक्चरिंग और एट द प्लांटेशन पार्ट, ओके, व्हाट इज हैपनिंग इज they have to use a lot of pesticides, herbicides, insecticides, to for mass production. Otherwise, damages बहुत होते हैं crops को, because वो crops में कीड़े लग जाते हैं, फफूंदे लग जाते हैं, तो वो डैमेज कंट्रोल करने के लिए ये सारे जो केमिकल्स हैं वो उनको यूज करने पड़ते हैं। तो एंड ऑफ द डे जो आपकी प्लेट में जो खाना आता है ना, उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है ना बहुत कम है। आप जो पानी पी रहे हो, यू नो समथिंग, वाटर इज अ लिविंग एंटिटी। वी ह्यूमन बीइंग्स आर मेड ऑफ 72% वाटर, बट द वाटर दैट वी आर ड्रिंकिंग इन द सिटीज, इट्स डेड वाटर, राइट? वाटर का काम क्या है? प्यास बुझाना काम नहीं है पानी का। पानी का काम है आपके ईच सेल को रिजुविनेट करना, आपके ईच सेल को हाइड्रेट करना, आपके ईच सेल को लाइफ फोर्स देना। बिकॉज वाटर हैज अ लैंग्वेज, वाटर इज अ लिविंग एंटिटी। पुराने जमाने में अब जो जो स्ट्रीम्स, पानी निकलता कहाँ है, कहाँ से है? स्ट्रीम से आता है, पहाड़ों से आता है। अब सोचो पहाड़ों में उस पानी को, इट्स अ बबलिंग लिविंग एंटिटी। उसको, उसके पास मिनरल्स है, इट कलेक्ट्स मिनरल्स। साउंड है, पहाड़ों के पास अपना एक एक इट्स अ वेरी पीसफुल साउंड, सो इट इज अ ब्लेस्ड वाटर। Then water has light, pure sunlight. So that water is a life force, a living force. But वो जब तक हमारे यहाँ आता है cities में, it is lying in reservoirs for months, for years. So उसमें ना कोई लाइट होता है, ना कोई साउंड होता है, प्लस इट इज कॉम्प्रोमाइज। केमिकल से उसको ब्लीचिंग करके उसको क्लीन किया जाता है, बिकॉज इट हैज लॉट ऑफ पोल्यूशन इन इट। सो एट द एंड ऑफ द डे जो आपकी ग्लास में पानी आ रहा है ना, it has no nutritional value. It is dead water. So the water that we are drinking is, contaminated, or it is devoid of any health element. Food that you're eating is far from perfect. Water that you're drinking is dead water. The air that you breathe, we all know AQI now. Okay. So the air that we breathe is full of pollution. So our lungs are compromised, our kidneys are compromised. So, and the lifestyle that we are leading, हमारा सोने का टाइम नहीं है, उठने का टाइम नहीं है, हमारा स्क्रीन टाइम जो है, तो we are almost all the time exposed to digital, exposures. So our eating patterns, our eating habits, we never eat, either we are skipping meals or we are eating untimely meals. So all these lifestyles, then alcohol, then cigarettes, then atmospheric fumes, all that, what is it doing? It's creating a nutritional gap in our body. तो क्या है, हम खाना तो खा रहे हैं, पानी तो पी रहे हैं, हवा तो ब्रीथ कर रहे हैं, लेकिन हम एक्चुअली बॉडी में फिर भी न्यूट्रिशनल गैप क्रिएट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत कम है जो भी हम कर रहे हैं। हाँ, अगर आप पहाड़ों पे जाके रहने लगो, जहां पे आप एकदम शुद्ध फॉर्म में खाना खाओ, आपको शुद्ध फॉर्म में पानी मिले पहाड़ों का, एकदम शुद्ध हवा मिले, और आप 8 बजे सो जाते हो, सुबह के 5 बजे उठ जाते हो, ट्रस्ट मी, आपको किसी भी न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं है। यू विल गेट फुल न्यूट्रिशन, बट वी कांट डू दैट, वी लिव सिटी लाइफ। और ये सारे चीज के पीछे एक बड़ा जो एलिमेंट होता है ना, जो कि हमारे अंदर ये गैप क्रिएट करता है या हमारे अंदर ये विकारे प्रोड्यूस करता है, वो है स्ट्रेस। आजकल बच्चे भी स्ट्रेस में हैं। हमारे जमाने में ना, हम पढ़ते तो हम भी थे, लेकिन स्ट्रेसफुल पढ़ाई नहीं होती थी हमारी। आज के बच्चे भी इतने स्ट्रेस है, बिकॉज कंपटीशन लेवल्स आर सो हाई दैट दे आर ऑल स्ट्रगलिंग टू मेक अ प्लेस फॉर देमसेल्फ। तो ये स्ट्रेस जो है ना, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे बॉडी में बहुत तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए। तो अब ये न्यूट्रिशनल गैप को हम कैसे ब्रिज कर सकते हैं? इफ वी वांट द बॉडी टू स्टार्ट वर्किंग ऑप्टिमली, we all we need to do is bridge this nutritional gap
थ्रू फोर्टिफाइड न्यूट्रिशन। तो फूड से जो न्यूट्रिशन हमको नहीं मिल रहा है उसको हमको सप्लीमेंट करना पड़ेगा विथ फोर्टिफाइड न्यूट्रिशन इफ वी वांट टू bridge this nutritional gap and make our bodies work optimally, make our organs work optimally। और जब organs आपके optimally काम करेंगे तो naturally हम बीमार नहीं पड़ेंगे, क्योंकि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो टॉप गियर में है, आपके लंग्स जो है ना वो फुल पावर पे काम कर रहे हैं, आपके जो किडनीज जो है ना उसका जो फंक्शन है क्लेंजिंग का वो सही तरीके से कर रहा है, योर हार्ट इज पंपिंग इनफ ब्लड, enough oxygen into your system, so you're working as a very how do I say, well oiled machine your body is functioning। So friends, please understand, once we become sick we have to go for medical intervention, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, we have to go for medical intervention। My job as a wellness coach is to show you ways and means of how not to have to go to a doctor। कितना हम प्रोलॉन्ग कर सकते हैं कि हमको डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़े, क्योंकि एक बार हम जाएंगे तब तो हमको ये मेडिकेशन लेना पड़ेगा। और मेडिकेशन क्या है? इट्स अ केमिकल कंपाउंड that you're putting in your body day in and day out। Trust me, it is causing lot of other problems in your body। तो हम मेडिसिन, और ये मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगी by a doctor। At the end of the session we will see a video and you will know what I'm talking about। Okay, so always remember one thing, wellness comes before illness, prevention is always better than cure, we have heard it, right? So let's think about prevention, and our body is a super smart, super efficient, precise machine with inbuilt sensors, okay, that keep giving us indications and warnings। So our body has the power to heal itself provided we nurture it well। तो हमारा जो बॉडी है ना उसको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, उसके पास वो पावर है कि अपने आप को हील कर ले, लेकिन वो हील करने के लिए जो मैटर है, जो मटेरियल है, जो इंग्रेडिएंट है, वो हमको उसको प्रॉपर एलिमेंट में देना पड़ेगा। एंड टू प्रूव दिस पॉइंट एंड टू शो, okay, so now before that what I will do is let us understand nutrition through a little bit of a PowerPoint। Can I have okay, I can share the screen, all right, thank you so much। So can everybody see my screen? Yeah, is it visible? Okay, so this is a question that we all need to ask ourselves, what is your priority in life? Wealth, very good, wealth होना भी चाहिए, okay। So some people, they want wealth because they want to come in that bracket of 5% people in the world, and that's a good thing to happen, we all need to become wealthy and there's nothing wrong in wanting to be wealthy। What is your priority? Family, so that's also one big priority that we have and we should have, because at the end of the day it is a responsibility that we need to cater to। Country, we all want to do something for our country, right? In some way or the other we want to contribute here and there for our country, that's something we all would like to do। Hobbies and interests, we all should have, jaise like Jyoti introduced me, it is my hobby to go trekking, it's my hobby to go cycling, that is a stress buster for me। So when I do that I actually rejuvenate myself to a better tomorrow, so I'm again up and about to work as much as I have worked today। So you must have certain hobbies, you must have certain interests which is not part of your work that you do every day, or health also। But I would say all this that you read, wealth, family, country, hobbies, all that you can contribute to if you have this health। अगर हेल्थ नहीं है तो फिर हम ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ना हम पैसे कमाने निकल पाएंगे, ना हम फैमिली को जो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं वो कर पाएंगे, इनफैक्ट हम उनके ऊपर बोझ बन जाएंगे, ना हम कंट्री की तरफ कोई कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे, और ना ही हम अपने हॉबीज या इंटरेस्ट को परस्यू कर पाएंगे। तो द सेंट्रल फोकस जो है ना हमारा इसके ऊपर होना चाहिए। एंड फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड वन थिंग, हम सब लोग बैंक में पैसा रखते हैं, राइट? व्हाई डू वी कीप आवर मनी इन द बैंक? Because yes, saving। Why do we want to save? Because we know one day when we are not earning that kind of money, this money is going to help us, right?
Think of health exactly in the same way. Every day you're putting something in the health bank. और जब रोज 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 आप हेल्थ बैंक में थोड़ा थोड़ा डालते हो, तो इन दोज years when you will not be able to contribute so much, when you will not be probably able to be so active, your health bank will come to your rescue. ओके, बट दैट डजंट मीन कि आप उस समय उसमें बैंक में डालना छोड़ दोगे. आप बैंक में जिस दिन डालना छोड़ दोगे और सिर्फ निकालने लग जाओगे, तो एक दिन आप बैंकरप्ट हो जाओगे. तो बैंकरप्ट नहीं होना है तो हमको हर समय कुछ ना कुछ डालना है और निकालना भी है. एग्जैक्टली द सेम वे हेल्थ के बैंक में हमको कुछ ना कुछ डालना है और समय आने पे निकालना है, डालते रहना है, समय आने पे निकालना है. सो दैट इज व्हाट हेल्थ इज ऑल अबाउट. व्हाट इज हेल्थ? People, health is not merely absence of disease. That's a very myopic way of looking towards health. Health is a state of complete physical, mental, and social well-being. फिजिकल, आप सर से पांव तक अगर आप हेल्दी हो, आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, आप खा सकते हो, पी सकते हो, दौड़ सकते हो, घूम सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, डांसिंग कर सकते हो, बच्चों के साथ हाइकिंग कर सकते हो, बाइकिंग कर सकते हो, यू आर फिजिकली हेल्थी. बट to remain physically healthy, you also have to take care of the 6 inches above here. It is a very small area, but the neurotransmitters from here are managing your entire body. So mental health is of very, very big consequence. Okay, so we should never ever, how do I say it? Deny, or we should never compromise on our medical health. And social well-being. Man is a social animal. And if we have a social circle, social life, we live longer plus healthier. We live better lives. So a state of complete physical, mental, and social well-being is what means total health, holistic health. We have to pay attention to our holistic health. Now, reality of life is this. All our life we are running after money. पैसे जमा करना है, पैसे जमा करना है, पैसे के पीछे भाग के. क्यों? क्योंकि भैया पैसे के बिना लाइफ चल नहीं सकती है. और लेकिन इसका डाउन साइड क्या है कि वो पैसा जिसको आपने इतनी जद्दोजहद से कलेक्ट किया, इतने साल काम करके, जिंदगी के 40 से 45 साल हम लगा देते हैं पैसे कमाने में, और फिर उसी पैसे को हम अपने हेल्थ के ऊपर, डॉक्टर के ऊपर, इंश्योरेंस के ऊपर, हॉस्पिटल्स में, नर्सिंग होम में खर्च करने निकल जाते हैं. भैया क्यों? वो पैसे को अपने ऊपर खर्च करो ना. जाओ फॉरेन घूमने, जाओ गोवा घूमने, जाओ ट्रेकिंग, जाओ बच्चों को लेके, अपने ऊपर हेल्थ खर्च करेंगे ना, क्योंकि हमने उसको जमा किया है अपने सुख के लिए. तो फिर हम उसको डॉक्टरों को क्यों दें? तो ये बैलेंस कीजिए कि जिस पैसे को इतना मेहनत से जमा किया है, साथ साथ हेल्थ को भी जमा कीजिए, ताकि उस पैसे को हमको डॉक्टर्स या नर्सेज या हॉस्पिटल्स को नहीं देना पड़े. ओके, नाउ हाउ टू अर्न. ये अर्न फॉर्मूला 4 पिलर्स पे हम हेल्थ काम करता है. And the four pillars is called earn. You have to earn your health. It is not going to walk into your life and say, okay, here I am. Now you can use me. It's never going to happen that way. We have to earn our health, just as we have to earn our wealth. Okay. Now, earn. How do we expand this earn? Exercise. Every day. If you can't do anything else, there are various forms of exercise are available. You can do weightlifting, you can do body weight exercises, you can do surya namaskar, you can do yoga. If you can't do anything else, ensure that you want to walk minimum 10,000 steps every day. Minimum. That's not the maximum. कम से कम 10,000 steps. Every mobile phone these days are smartphones, and it has an automatic app there which counts your steps. Just ensure that you walk 10,000 steps every day if you can't do anything else. But a variety of exercise brings you lot of benefit. A holistic benefit comes when you do a variety of exercises. Attitude. This is about mental health. Understand, friends, attitude builds our altitude.
How we, when there is a problem, how do we deal with it? Do we react to a problem or do we respond to a problem? Who are the people that we surround ourselves with? Are we surrounding ourselves with, people who are very negative, who are always focusing on problems and never on solutions? Get out of there. You have no business being there. You have to have the right attitude, because this attitude is what is going to take you far in life. So you must have a very positive attitude, a very positive aura, a very, positive outlook towards life, towards people, towards others, towards yourself, towards your family, towards your workplace. Attitude is everything. You know, it's not what you it's not what you do when you're faced with a problem. It's how you do what you do when you're faced with a problem is what will determine your attitude. So always have, this kind of attitude where where you're humble enough, where, in times of adversity you don't talk negative, and in times of success you are humble enough to acknowledge it. Okay, so have a good attitude. Third चीज हम करते ही नहीं. We don't pay enough attention to rest. The one thing that is compromised in